नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टोरी विद सुधा पॉडकास्ट। मैं हूँ आपकी होस्ट सुधा। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अ कम्प्लीटली इनटू बिजनेस टॉपिक, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है सी इज ए फाउंडर ऑफ OD07 कैफे एंड सी हैज हर ओन इंस्टीट्यूट कॉल्ड अकेडमी। हर नेम इज मिसेस वैष्णवी मोनिंगी। आज वो हमारे पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी सारी एक्सपीरियंसेस, अपना एजुकेशन, अपना नॉलेज बहुत अच्छे से शेयर किया है। आई होप आप ये पूरा पॉडकास्ट देखेंगे और ये पॉडकास्ट आपको अपने करियर चुनने में, करियर बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। सो प्लीज वेलकम मिसेस वैष्णवी मोनिंगी। हाय वैष्णवी, वेलकम टू माय शो योर स्टोरी विद सुधा पॉडकास्ट। आई एम रियली ग्लैड कि तुम मो शो को आसीच आ किसी डिफरेंट तुम जर्नी माने बिजनेस कैरियर विषय किसी आम कन्वर्सेशन करवा जोटा कि लोक मान बहुत प्रभावित करिवो। Okay, thank you Sudha for inviting me. So I'm so thankful because a great initiative. आपण बरहमपुर थाई एमती गोटे चैनल स्टार्ट करल जे आमर एक्सपीरियंस आम शेयर करूँ। To start with, I'm Vaishnavi. By profession, I'm a chartered accountant, and by passion, I'm an academician, and I run couple of businesses. Okay, so can be the life challenge here. see, best places, Berhampur, enjoying my hometown like that professionally, then personally, and with my kid, everything is smooth running, smooth. So, some brief about your education. You said you have done chartered accountant. Yes. So, brief introduction. Okay. So by profession, I'm a quadruplet, means charita degree karichi mu. So I'm a chartered accountant, cost accountant, company secretary, and an LLB graduate. So move long way back, around 11 years back, I have finished my chartered accountancy course, and in my journey of chartered accountancy, loko kohanti ki passing CA is very tough. Yeah. Semida gode toughest gode exam re ମୁଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 7th rank ଆଣିଥିଲି. So proud to say. So there is no other except me from Odisha who is below 1 to 10 ranks in India from our state. So I feel so proud. Simultaneously company secretary और cost accounting भी करिली. After marriage, during my pregnancy process, I felt like a bit detachment. तो से टाइम रे जाइके मु एनरोल करथिले LLB पे. हाँ, तो पाठ पढ़ी and gain some insights. So after marriage, after conceiving, mu LLB kali. So you are completely into education, right? हाँ, yes. But why CA? Why CA is simple. देखो, everyone chooses career because of two things. First important thing is a financial stability. Second thing is your desire, means तुमको कौन इच्छा अछि. So most ofly कौन होते कि doctors रो पिला doctor हुए because they saw their parents being doctors, so they also yes, they also want to become a doctor. So एमती chartered accountancy रो फादर भी चाहिए कि मो पिला भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी करे. सेमेदी कौन है, I belong to a family background. My father is a businessman. So I saw my father giving lot of respect to his auditor. So then one fine day after finishing of my 10th, I wanted to do science because science रे मु बहुत बढ़िया excel करथली. I got good marks in science. But because I have टिके मते रक्त हेले डर. अच्छा. Fine. So out of that fear, I didn't take science. Then my father said कि आउ डॉक्टर केतगी प्रेस्टीज आउ जेतगी तमको सम्मान अछि सेडा आउ थरे तमको आसीबो गोटे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स रे. So I chose my career so that I want a respect and I want to create a name because CA is the toughest courses to crack. So गोटे toughest course को मुझे crack करिबे, I will be remembered for a long time. So that was my thing. I chose CA. आ मु केबे CA करिबे ले कहली. Then
सी केते वर्ष हेबो केते की टाइम लागिबो एडा किए भी जाना नहीं झियो पिलार तो बाहागर करियार अछि ए सब जा थिलाडो दैट मेड मी बूस्ट कि ना मु सीए आगा करी राइट यस तो सीए कोठी कंप्लीट करथि आपण एमिति हमरो सीए कोर्स विषय बहुत गुडा को लोक जानि नांदी बट देयर इज नो पर्टिकुलर कॉलेज in the entire India for CA. CA is an institute being registered by Parliament. They have their own institute in Delhi. But our ko jagga re bhi tamro CA ro college nahi. They have branches for registrations and admissions. Ame pura dependency habo private institutions upare. हाँ सेमेरे जो जगह रे कोड़ा भल थिला से स्टेज रे मु सेति जगह रे नहीं ही एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई गिव इंपोर्टेंस टू माय सेल्फ स्टडी सो एबे देखन गोटे कोचिंग को जीवो टीचर कोन बुझेला सेडा आथरे बुझिया पड़िबो आउथरे आमे डिकोड करिवो आउथरे पड़िबो सो मते बेटर लागे कि तांके पड़े आरो बेटर मु ही बसे के पड़िबो सो मु दी थरो टाइम सेव करि पारि सो आई हैड लॉट ऑफ माय सेल्फ प्रिपरेशन ड्यूरिंग माय फाइनल स्टेजेस ऑफ सीए So mindset je mane पढिबार अछि yes definitely आपण ठीक कहि छनी okay nice yes so how come into business केबे बिजनेस को केबे जासी आपण so एबे देखन कैरियर रे कोन अछि at the very earliest of the earliest stage I completed my CA तो CA करला समस्त कोन के बाळ पाची जीव हेले अच्छा but fortunately मु 1 cross 22 hello I finished off my CA so mu job पे जाथली my first job was in Wipro yes Wipro re being auditors I roamed all the parts of India and even Singapore Ireland and Portuguese after that for a change I went to an oil and petroleum based company in South Africa and Eastern Africa so mu job before coming back to Berhampur 4 years mu job karthili so job karla pore I could realize that when you work hard for someone to grow our pockets are filled but mu se jodi se interest hi mo nijo upre jodi karthani mu kete bodi so job is something which gives you money but the satisfaction ro nathila being coming from Berhampur business place everything is so related and connected to your business से mind रे पुति जाय छै कि कोडे ना कोडे business करियर अछि so same mind रे आस्ते लागे हां आमे एत्ति की जो honesty रे आमे आउट कंपनी ग्रो करे करछ मु निजे ही गोटे करबी so that was an initiative कि मते mind रे आस्ते लागे चलो आमे भी गोटे business ता स्टार्ट करिया तो फिर what is story behind OD07 yes truly since I said that ki more career finish hela patha sabu then went for job for 4 years returned back for the purpose of marriage other commitments were there तो marriage पाही मु बरहमपुर को पळा आसेली so बरहमपुर रे just chill करथली marriage time तो newly wed couples so बरहमपुर कोन हला कि एमिदी मो हस्बैंड संगरे टिके चिट चैट करिया इंटरेस्ट थिला कि तांको बिसरे आउरी जानियार थिला बाहर टिके बुलिया पे so options बहुत कम थिला either you would have go तमे जीवो गोटे जूस सेंटर रे छड़ाई की पीबो जोड़ा के पार्किंग रो इशू so 5-10 मिनिट वाइंड अप करी आउथर पळास ना हेले तमे गो होटल रे जा इडली पूरी उपमा खाइबो तमे खाइला भीतर आउ 10 जण जगे थिबे कि हमें केबे छड़ाबो सो इट वाज मोर ओवर दैट यू स्पेंड टाइम बट नो क्वालिटी टाइम वाज स्पेंड सो डिफरेंस अछि कि मु तांको सहित अछि मु तांको सहित थाई कि मु तांको केते जानि छी सो सेडा मते क्लिक करला कि जो 9 वर्ष तळे मु जो बरहमपुर छाड़ी के जाइथिली मु फेरी के आसला पर भी सही रोड्स सही एनवायरनमेंट से सब जो व्हाई पीपल आर नॉट टेकिंग के टिके आगु बढ़ when your entire payment system was changed to digital everything was so new why can't our place
से टाइम रे क्लिक हैला कि नहीं बरहमपुर गोटे निहाते गोटे न्यू थिंग हैज टू कम अप वेयर यंगस्टर्स कनेक्ट हे पाइबे how retired people can chill with their spouse to have some coffee. Moreover that of quality time spending, when we go to the city culture, ଆପଣ ଦେଖିବେ cafes are meant for off the business. Means केमिति समस्त कहते ना चाय पे चर्चा होती है पर कॉफी में व्यापार होती है. Okay, nice. Right. So what happens in cafe is आमे जदि गोटे क्लाइंट से क्लाइंट हेबो ना नहीं हमें जाना नहीं बिकॉज इज अ पोटेंशियल क्लाइंट आमे कहबो सर आपण ऑफिस को पळा संदु क्लाइंट रो बिहेवियर कोन होय जनरली फॉर्मल हे जाय ताके टिके डरंती ऑफिस को डाकी चंदी कोन बाबू बट से गोटे क्लाइंट संगरे फ्रीली तांकर फाइनेंशियल डायग्नोसिस जदि करियर अछि कोन भाबु चंदी कोन करियर अछि ए सब जा टिके इनफॉर्मल वे रे हुए. So city culture रे cafes are very hit because तमे जानी ना से क्लाइंट तम पाक आसीबो ना नहीं से फ्रेंडली एटमॉस्फियर पई जनरली मीटिंग्स होबो जाबो कोन सर आपण पाखो थिबा कैफे को पळासन सेडी कथा हे जबा. सो व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ सेल्स विप्रो रे अधिक रु क्लाइंट जगह तळे थिबा सीसीडी की बरिस्ता रे होई थाय. सो से गुडे कोन होचे that gives an extra edge to people to connect, so you can share your knowledge also. So it is freeness asibo client ko to seda hoche main purpose. So being an auditor and an financial advisors, we need to talk to people ask us advices. ऑफिस को आसले तांगे भाबे कि मैडम संगे एडवाइस नलो जति फाइल देबनी कोन भूल भाबी बदे सो हमें कॉफी ऊपर चर्चा कर ले डिस्कस कर ले. He has taken some advice. It is up to him whether he turns up or not. Yes. So coffee ro hochi kana quality time and productive time. ए तीड़ा मोर माइंड रे थला. सो Berhampur pai darkar ali Berhampur's first own restaurant cafe long back in 2017 was started and initiated by me. Yes. Okay, nice. तो फिर किसी difficulties आसिला जब start करिया कथा भाबिले तो किसी challenges आसिला. देखो if you are seeing a खिलता हुआ rose, so the bed of roses was not possible without thorns. कंटा न बाजी तो तमे पिक तो करि पारिबनी ना रोज. सो टुडे whatever you are seeing this coffee culture or the cafe culture कि 7 years passed away to the OD, we have faced initial challenges, growth challenges, maturity challenges, expansion challenges. So what business perspective को बुझार अच्छे means no start है आगे भी you have people throwing stones on you. तापर फल दुसला परे भी you see people throwing stones on it because I want to catch it. तापरे से fruit टा पाचिला परे भी we throw stones so that it should not spoil the other thing. So challenges are evident in all the phases of your business. Yeah, that's true. But so initial आपण जो coach initially it's a funny incident, but देखो what happens is मो बाहर बुली आछि मोर करियर स्टडीज हो कि आर्टिकलशिप हो कि जॉब हो आफ्टर जॉब ए सब जगह मो 8-9 वर्ष पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ एशियन एंड यूरोपियन कंट्रीज बुलीथली अफ्रीकन कंट्रीज भी. सो कैफेज बी सो कॉमन ओवर देयर तो मते लागिला कि एडा दे एक्सेप्टेड हे पारिबो. तो इनिशियली व्हेन आई शेयर्ड दिस सॉर्ट ऑफ ग्लिम्पसेस कि मोर कैफेडा खोलियल भाबुचे बरहमपुर रे, पीपल जस्ट मते कह पागल हे गेलु कि तो बरहमपुर रे गोटे कॉफीडा तो 60-70 टंका रे बिकिया को प्लान करछु. एडा हमें 1/2 कॉफी पीबो जेडा के 10 टंका 5 टंका शेयर करबो सेडा हमें तो खुशी. तो when people and public who are my ultimate customers who have means के coffee नेबार अछि तांके मते कहउछन कि this would be something flop program before production. Okay, the flop mode.
सो सेटा गोटे लागुला कि ओ माय गुडनेस एबे ब्रह्मपुर अच्छी कि 1/2 कॉन्सेप्ट कैपुचिनो की फ्रापेट तो 1/2 हेबनी आउ एडा को तो शेयर हेबनी बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड ब्रू कॉफी नॉट ब्रू इट्स ब्रू मींस तुमरा कॉफी बीन्स रो सेडा ग्राइंड हे कि तमे आखे आगरे ही सेडा को हमें तारु कॉफी काढी के हमें करिबो सो दिस प्रोसेस इज वेरी लेंदी एंड कॉस्टली अफेयर सो जदि मोर प्रोडक्शन ही कॉस्टली होची तो मु चार्ज भी करबी कॉस्टली सो सेडा गोटे चालुथला देन एबे को पीपल व्हेन यू आस्क कि ब्रह्मपुर आज हैंग आउट करबा कोन खाइबा चाउमीन इडली पूरी सो जोड़ा कि हमर ब्लड रे पूरा नस नस में है कि वी विल बी हैविंग समथिंग वेरी रूटीन काइंड तो तांको मो यस पास्ता स्पैगेटी देन बोलोनीज ए सब जा देबी तो सेडा गोटे चैलेंजिंग थिला ये तो से टाइम रे हमें भाबिलु कोन people like change but if change is according to their palate means tomar tongue tomar taste हिसाब रे जदि हमें तांको सर्व करिवो why will not people have something good so आमो कैफे रे मु जो इंट्रोड्यूस करिथिली it were all Indianized means Indian style Italian Mexican and continental so like गोटे थिला कि coleslaw sandwich जेडा कि लोक जानना सेडा को आथरे हमें को टिके चेंज कर लो सो दैट हमें ब्रह्मपुर पीपल कैन हैव इट कंफर्टेबली सो से मेरे पास्ता देन वी हैव काइंड्स ऑफ बर्गर कि पनीर टिक्का बर्गर जोड़ा कि नहीं तो जनरली तो से हिसाब रे मु टिके प्लान आउट कर ले कि बिकॉज यू आर थिंकिंग टू हैव समथिंग न्यू बट इट शुड बी एक्सेप्टेबल so not going beyond their imaginations but think तांको को acceptable way रे हमें सेडा चेंज कर जस्ट टिके सब थोड़े कहले आपण जे टेस्ट फूड as per my knowledge माने टेस्ट फूड टचेस ह्यूमंस हार्ट एंड माइंड बोथ वे ओके तो सेटा ही माने लोक माने चाहउछन जे हम टेस्ट फूड दरकार बट सेटा जो भी टाइप रो काहे ना तो सेटा ही आपण जो प्रोवाइड करछन इट्स वेरी गुड a second thing होची पछारी बे आपनकर ओडी 07 कैफे रो मेन टॉप 5 यूएसपी ओके सो देखंदो यूएसपी मींस अ यूनिक सेलिंग proportion कि सेटा प्राइस हो कि प्रोजेक्ट हो इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस सो एडा हमर गोटे प्रोडक्ट बेस तो हमर यूएसपीस गोटे बिजनेस रो वी कैन मेजर इन 5 थिंग्स फर्स्ट इज product second is a price quality service and then comes your idea so ए जो पांचटा जिंस रे आमे जदी गोटे गोटे एरिया रे गोटे गोटे माइलस्टोन को तमे रीच करिवो दैट बिकम्स योर यूएसपी like something you see Berhampur is famous for many people know that chicken pakora means first in thought asebo girija ku jiba सो सेमिति गोटे यूएसपी प्रोडक्ट ता मु एबे को क्रिएट करि पारिछि इफ मोर मेन्यू रे सेडा आज प्रोवाइड करि नेले पीपल कॉल मी एंड रश मी कि कोन वैष्णवी आज से प्रोडक्ट ता नै सो दैट प्रोडक्ट इज माय यूएसपी प्रोडक्ट सो व्हेन आई गो फॉर प्रोडक्ट माय यूएसपी प्रोडक्ट इज माय सिग्नेचर कोल्ड कॉफी सो लोको केबे भी भाबे कि टुडे आई वांट टू गो फॉर कोल्ड कॉफी देन डेफिनेटली द फर्स्ट सच वुड बी ओडी 07 so that is the product base semidi each segment ro jodi dekhebo I have like amar coleslaw sandwich is very high saleable product then it comes to red sauce pasta white sauce pasta and then people love our homemade brownies and donuts also so imidi more product USP hela then comes my price USP so price kon hochi मोर जो प्राइस मु गोटे कैपुचिनो की फ्रापे ना ओरियो ए सब जोड़ा दोचे इट इज वेरी अफोर्डेबल एंड रीजनेबल कंपेयर टू सो कॉल्ड ब्रांडेड थिंग्स तांकर ब्रांडेड वाला जेतिकी भी आसी चंदी तांकर हाफ टू हाफ प्राइस रे मोर प्राइस मिले सो बिकॉज Berhampur doesn't have any industries over here
we have some wholesale and retail markets. So people, it upper middle class become middle class look basi. So keeping in mind the price, because the price sensitive market, so more prices more key point. It's very affordable. Next comes my quantity. जदि क्वांटिटी को जिबा क्वांटिटी रे ही सब गेम बिजनेस रे बट इफेक्टिवली कोटे लोको आसी कि कोल्ड कॉफी पिउची इमिडिएटली ताके लागिबनी कि मते दीडा पियार अछि एबे कोन पे मते सोशल अछि सो हमें एतिकी प्रोवाइड करूछु क्वांटिटी सो दैट गिव्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द प्राइस ही पेड विद द थिंग व्हाट ही इज ड्रिंकिंग सो मोर सैंडविच भी इफ अ पर्सन कम्स टू हैव अ होल सैंडविच we provide good quantity ki se thoki jibo sera khaya pen tapra otra parcel kori jante even that happens with my white sauce pasta also so that is my quantity the quantity jodi tame price no cho lokor petto puruni means you are having a game of gimmick in that so quantity is the must because jo biकता है वो बिकता है तो क्वांटिटी मोर दोस्त छ मैडम तो 300 दैछन क्वांटिटी गोटा कर देखला हां एटा दि जण पे देखबो नेक्स्ट कम्स माय क्वालिटी जेडा कि लोक भूली जाउछनी टिके रंगीन जिंस दे देले फूड कलर्स कर देले सो क्वालिटी रे कॉम्प्रोमाइज जदी होछ यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर बिजनेस सो मोस्ट ऑफ द पीपल देखंदो 10टा ओपन होचे 20टा बंद होचे व्हाई बिकॉज़ sustainability of quality maintain करू पारी नाहंदी the only reason why businesses fail because day one रे बढ़िया quality देवे but day two decrease day three diminish और दूसरी बनी quality so ए सब जा करला रे कोन होचे मार्केट रे तमे भी उड़ी जिवो so सेडा next USP thing is idea देखंदो हम जोन कॉपी करी पळा आसले बट ता माइंड तू जो कॉपी करछ माइंड तक तुम कॉपी करना ना तारो बिजनेस चलला बट तुम बिजनेस चलला नहीं देयर आर n number of cafes being opened in recent 7 years but I proudly say that I am still in the market still in the leaderboard because my idea is not being copied by anyone so we take all sort of मुझे में 5-6 USPs कहली keeping in mind we keep a regular update on the trend how people react, how my idea has to be changed. So like that. Maybe categorically we design as USP. Nice, brilliant. Okay. तो फिर स्टार्टिंग जब करी तुली आपण को माने एबे मते किछि फील होछि कि साइड से तीनटा मिस्टेक न करिले मे बी किछि डिफरेंट हेताना किछि मिस्टेक देखंदो मिस्टेक्स जनरली समस्त करते जदि से मिस्टेक आपण दोबारा रिपीट करूच मीन सेटा तमरा हैबिट हेला राइट सो यू नीड टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स मु जनरली कोन करे कि आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम लाइक द फर्स्ट लेवल्स मींस मुही आम कम्युनिटी रे फर्स्ट गर्ल हु वेंट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स सो मुही गोटे फर्स्ट कैफे रखलिली फर्स्ट वन टू ब्रिंग अ ब्रांडेड आइसक्रीम स्टोर सो सेमिति फर्स्ट करले कोन हुए mistake one thing what we do is overconfident the first mistake people don't publicly speak but I say that I became overconfident at one point of time ki moro chalibo but since this is something which is not only restricted to me mo business करूची means customers भी आसे आलो छी ना तो से overconfidence कोन हला कि कैफे केमिति पहुंचबो टिके पब्लिक को रीच हला टाइम रे टिके लेट हे बोलो मींस आमे टिके मार्केटिंग ऊपर और ध्यान देथांतु सो फर्स्ट वाज ओवर कॉन्फिडेंट के हां आमे तो गोटे कैफेटा करलो पीपल आसे की विजिट करी के पड़ेले सो से ओवर कॉन्फिडेंस लोगो वी डिडंट गिव मच फोकस ऑन मार्केटिंग तो सेकंड मिस्टेक वाज I didn't give lot of importance pre-opening of marketing. Okay. Pre-opening रे भी marketing करियर अछि कि something is coming up. सेरा मो करनथली मींस एंजाइटी रे गोटे क्रिएट करियर थिला. सेरा हम करनथलु. So initially open हला परे गोटे 1-2 months लागेला कि एटा गोटे open हे छी एली. So marketing is highly essential.
बट मार्केटिंग रे एबे कौन हो छे देयर आर टू मार्केट्स वन थिंग इज एक्चुअल मार्केट यू आमे जोड़ा कि फिजिकली देखो छो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैम्पलेट्स बोर्ड्स लगेलो ये सब जगह देन यू हैव डिजिटल मार्केटिंग तो आमे डिजिटल मार्केटिंग ऊपर देलु से टाइम रे और बरहमपुर एते भी डिजिटल है नथिला सो आई एलिमिनेटेड फिजिकल मार्केटिंग तो तापर रियलाइज करला पर वी हैव रेक्टिफाइड बाय गिविंग pamphlets and making some banners and all to become visible so mostly is because of overconfidence the other two things are built up कि हमें सेटा नजरअंदाज करदेलु so before means rectifying that overconfidence को normal range रखा पड़ियो next is we need to understand कि मोर प्रोडक्ट मु कोडी बिकुची सो तांको स्टडी करिया बहुत इंपोर्टेंट सो माय मिस्टेक वाज टू नो मोर अबाउट माय पीपल इवन टारगेट कस्टमर्स यस करेक्टली एबे होची कॉलेज तो हमें कॉलेज पाकर पैम्पलेट्स बांधथलो हमें सेटा कर नथिलु सो टू किक स्टार्ट ना सेटा टिके स्लो हे गला सो टारगेट कस्टमर्स को बिफोर यू कम टू विजिबिलिटी बिफोर ओपनिंग तमे सेटा जानि देबार अछि कि तमरो कोन नाइस तो वैष्णवी तमे पर्सनली किछि माने काहू फॉलो करछो कि तमर इंस्पिरेशन किए कि तमे एज एन आइडियल हिसाब रे काहू किछि माने छ see I generally I'm a god loving and a god fearing okay why because मोर बेस्ट बिलीव होची कर्मा I generally believe that if you do good karma you will get good deeds and that too very soon so karma re believe करछे why because I'm a god fearing सेटा रॉयर अछि god loving तो अच्छु हम so सेति पे मते कोन जनरली गोटे इंट्यूशन दा आसे कि okay today I am serving something मुझे भी कोड़ा भी कोड़े गलती कर देली सेटा तो केमि देले मत आसीबो ना इट गिव्स अ कॉशियस मते टिके सेटा कोन डेंजर जोन दिखाए कि you should not go beyond what you are thinking because karma will pay you back right yeah हाँ so the major belief is karma yes you yourself are the karma for the better living Seda and my inspiration ever is my parents then I follow APJ Abdul Kalam ji right the one vision 2020 ए सब जगह कहले सेटा कोन igniting our minds so he is one of a visionary so ebbe भी केबे भी तांके कहबे dream 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 so I am a best daydreamer and a night dreamer because dreams only come into reality if you never dreamt of what you want to become or what you want to have तमे जदि से ड्रीम रे परसीव करलनी तो रियलिटी रे किमे जानो सो तांकर केतोडा स्टेटमेंट्स अच्छे that have been imprinted in my heart and brain so I'm a great believer and inspired by APJ Abdul Kalam Vaishnavi do you believe in destiny yes definitely destiny ऊपर विश्वास बहुत strongly अछि कारण मोर मध्ये मैं एक्सपीरियंस एडा कोचे बहुत जनटू सुनी जे डेस्टिनी बहुत माने मोस्टली समस्तंगर डेस्टिनी ही काम करे हार्ड वर्क माने डेफिनेटली दरकार बट डेस्टिनी ले मते ता सहित ही दरकार नले केबेले सक्सेस हे परियोनी तो सेटा पई मो पछाली डेस्टिनी कोन देखंदु राइट वे बैक फ्रॉम चूजिंग माय करियर रो so chartered accountancy course or something was out of my box वो भाभी भी नथिली कि मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट हेबी because I wanted to become doctor after completion of my 10th and I was very studious about science and interest but because of some phobia मु सेटा कहि पालिनी since I secured all India 7th rank in chartered accountancy course on one public interview re mu sebe for the first time sunili ki my father wanted to become a chartered accountant for some of the other reasons he couldn't
go for it. So ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ desire of my father ସେଟା ବୁଲିକି ତାଙ୍କର ଝିଅ ସେଟା desire ଟା fulfill କରିବାକୁ ପଡିଲା. I am happy enough that I am a chartered accountant. Even that my parents are happy because ତାଙ୍କର ଗୋଟେ unfulfilled କି unfinished dream ଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କଲି. So that was ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ destiny ନା. ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିକି ସେଟେଲ୍ ହେବି ହେଲି ମିନ୍ସ କୋଉ କୋଣରେ ବି ନଥିଲା. ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିକି ସେଟେଲ୍ ହେବାର ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟିନି. କୋଉ ମନରେ ଗୋଟେ ଥିଲା କି ହଁ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ପାଖରେ ରହିବା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଖରେ ହଉ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ I will be connected with my hometown. ଏ ସବୁ ଜାଗା ଥାଏ. And mostly Berhampur has its own nativity and other feel. କୋଉଟା ବି ହଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ. ଆଉ ସେ ବାଲା ଫିଲିଂ ଯୋଉଟା ଥିଲା କି ମୁଁ ସେଟାକୁ ଏତେ ଅଧିକ ମିସ୍ କରିବା ନଥିଲା. ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ଡେଷ୍ଟିନି କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ହାପି. homemaker come career oriented come academic come passionate ସବୁ ଜାଗା is possible though I am staying at Berhampur. So that's a destiny. ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନା, someone will not come and give you that this is your destiny and this is your destination. We need to choose that particular destination. I chose to select and come down to Berhampur. तो ब्रह्मपुर आसली हेले कोन एंदी कोड प्लेट रे सजेकी दे देबे कि हां मैडम तुम चाकरी नियो तुम रेड बेपार नियो. So destiny केबे when all stars got connected telling me that you need to stay back in Berhampur, one or the other dots got connected. So say maybe pura means destiny is the one which will take you to the top and will lead you to the सो माने तमे विश्वास करो जे निजो एक्शन ही निजो फ्यूचर डिसाइड करे बोली. यस देखंदो न्यूटन लॉ रे भी अछि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन दा थाय. एवरी एक्शन हैज इट्स ओन. व्हेन यू वांट टू विन अ लॉटरी, द फर्स्ट एक्शन इज यू नीड टू बाय अ टिकट ना. सो यू थिंक समथिंग हैज टू हैपन, मिरेकल केमे आसेबो. तमे जदि गोटे एक्शन करबनी, टुडे यू वांट टू ग्रो अ बिजनेस, तमे सीड कैपिटल काई, तमर आइडिया काई. सो व्हेन यू गिव योर एक्शंस you will have equal and ripple reactions to be coming on. तो आमे first step नबार अछि, first action नबार अछि, first courageous movement नबार अछि. से सब जदि करबानी, even your stars will also fall flat. Right. So generally action is must. So ଏବେ वैष्णवी को पढ़े सिना. So how do you define yourself? ए एंगल रे तो मु केबे भाबेनी असे बिकॉज़ एडा भाबिया पे जनरली रिटायरमेंट दरकार. So rightly asked, when you want to describe Vaishnavi, तो मु कहबे कि I am a trailblazer. Means the one vibrant and taking courageous bold steps. And Vaishnavi is a girl next door, where she is approachable and you can have any kind of conversations with her. She will be helpful, she will be admirable, everything. So लोक भाबंती कि वैष्णवी she अच्छी तो इतनी पड़ी छी कौन होएगा. So से जो गोटे थाए ना, से गोटे नोशन टा थाए, सेरा मु बिल्कुल ही नहीं. So I can have a friend of 5 years old, I can have a friend of a 50 years old, because I'm so approachable. And why I said I'm a trailblazer, because I always take decisions which are out of the box and I make it happen. Bold actions. So Vaishnavi is a trailblazer. Brilliant. So your likes, any strength or key points you want to share? See, when someone will ask what do you like, then I like adding degrees to my name.
first thing. Actually, as per my knowledge, you love cooking. Yes. So see, first liking is I'm a passionate reader, and next thing is I love cooking. Cooking means kona imidi cutlery design ki imidi hi darkaro artisan wala nahi, but fastly, easily cook kariyar ache. And after being mother, I could realize the fact ke how cooking makes an important role in a life of a human. So when I cook and give it to my son, सभी मो भाग्य रखे मो पिला खाएगा ना नहीं, right? So challenging thing is also that. So जो मो निजे लाइक करे जब कुक करे ना, गोटे होचे self satisfaction, along with that the kid is also satisfied. And because of that I make homemade cerelacs and all kind of things, and some organic kind of foods which are very nutritional value. So since my son is 4 years old, I take minute and very precautionary sana jeans upar be beshi dhyan diye e sab buja kare. And I write quotations. Yes, so my kind is I write quotations. मते बहुत अच्छा, like मते थोड़े peace zone रे जिबी I write quotes on lives, quotations है सब, मते बहुत भल लगे. My best thing is the one you are is because you have always dreamt of. Today you are standing here because I thought of going there. So means most of the time would be mobilizing your inner motivation. Yes. Today you are successful because you have dreamt of being successful. If you have not dreamt of being successful, if you curse yourself, since I believe in karma and destiny, the unsuccess will follow you. So take it motivationally, yes. And your strengths? My strength is first myself. Okay. And so any kind of koda bit mushkil jinso bhi asibo, I take it very lightly. Okay. Actually, everything is about see, I had a crack in my ankle, knee, but still people don't know कि I'm having a fracture. I'm working. तो more strength हो चुका ना, more weakness को मैं बाहर देखेंगे. That is my major strength. Okay, nice. You're getting. And next is my strength comes from the support of my family. True. So I'm so grateful that I have a wonderful family. My parents, my in-laws, my husband, even so cooperative, my 4 years old kid, my sisters. Apart from that, I have many of my well-wishers. Okay. They always boost me, my confidence, my dreams. So my strength is my people. Okay. So main key points of yours? Key points that people ask me one repeated question, Vaishnavi, कौन पे इतने भागाभागी करचू है, इतने दौड़ा-दौड़ी कौन पाएंगे, समझते कौन भी. So the main key point which always drives me, not खाली means pushes me, is one quote. Okay, the day you are satisfied, you are dead. A statement of last 12 years back, I have read in one of a book gifted by my colleagues. तो से बुक रे लिखा है तो से इतने इन डेप्थ मीनिंग अच्छी कि हाँ सत्य रे आज मैं कहूँ सब अच्छी भाभी बो से ही दिन भगवान तब रख दे. Okay. Yes, the day you think that you have everything, you are dead. So that keeps me always कि हाँ वैष्णवी क्या मैं satisfied हूँ.
Nahi, you need to go more. Yeah, right. Got a degree kolu. That is okay for that. If the world is moving ahead, you need to have couple of things. Yeah. Updated Then, always. you keep updated. Then you brush yourself. Hero by the cuts and the shines. Yeah. So you need to shine yourself. So I keep on upgrading myself to keep in touch with what is happening. Yeah, So right. से स्टेटमेंट का मतलब बहुत लेवल को पहुंच जाते बहुत हेल्प करथिला एंड द अदर की पॉइंट जरा अछि कि I want to have a retirement at the age of 40. Why? Yes, people will think that what foolish is saying, but people generally retire करते at the age of 60. से टाइम में तुम्हारा physically mentally भी retirement ही जाए. Okay. You don't enjoy actually. And you even can't spare time with the near and dear ones. Okay. So ମୁଁ କଣ ଏବେ କେତେ ବି କରିବି तो 40s रे early of 40s रे तुम्हें जब retire हो जाओ that time you will be having a quality time with your kids because their career is going to start. Okay. Fractionally देखिबो they would be in their higher secondary schools तांकर career build करियर अछि. So you will be having much of the time to spend with them. You can share your experiences with them. You can help a hand with them. Okay. And then तुम physically भी बड़ा थेबो कि तुम कोड बुली पारिबो कोड को भी जाई पारिबो For your own happiness, me time the me time आसी पारिबो. So Okay. एबे केति थेबो तमरो करियर वाइज सब करो. So सेबे तुम पढ़ो 40 पर जल्दी पाइबो. तुम लेटर स्टार्ट करो पढ़ो लेटर मिलेबो. Okay. So I started early, so retired early. Okay. Okay. Now comes to your second business, Academy, right? How this is started and what is the purpose behind this? Okay. So it's actually CA Academy. Okay. CADEMY. So CA is my main priority. This is an academy, a professional academy, majorly for students pursuing commerce Okay. and those who wanted to become a chartered accountant or a cost accountant or a company secretary, or they wanted to crack any CLAT, means CLAT, law entrance examinations. So this CA Academy has a full form called as Commerce Academy. Okay. Just 1 year back start करिथिले, which primarily कहले ना majorly focuses on CAs, DM and CAs. Is this for practicing or for your sharing your knowledge? Thing is देखो chartered accountants in the initial of my few lines I said that we don't have a particular college for CA. So generally people or students majorly depend upon private institutions. So guidance is what lacks in our CA course. Okay. So आपन जब देखिथिबे 2% पिलाने पास हेतिबे 10% पिलाने पास होचनी. It's not about the pass percentage. It's because students don't have a proper guidance. They don't have proper resources. So मु बरहमपुर थाई मु जदी एतिकी करि पारुची मोर निज पैशन थिला जानियार. बट समस्त को से पैशन थाए नि ना जदी के एक्सपीरियंस होल्डर कह देबे से सुनी देबे. So एबे दो at the tip of your fingers information ता पाई जाउछन. बट आमे गोटे जिनसरा दरकार आपण गोटे सर्च करिवे कि नले एआई रे पचारिवे कि नले जीपीटी रे पचारिवे. You have n number of answers. Still kono am pakare answers achi but proper answer gote nahi. So when I saw students at Berhampur being biased by many wrong routes and making that course more tougher, means starting gale सेटा को proper knowledge नहीं attempt देले fail हे गले. So ताके reason जानी ना कि कौन पे fail हो चल. तो mistake ऊपर mistake करेगी. Lastly कौन हल्ला CA has become the toughest course to crack. Okay. It's not CA being the toughest course, but students made it to be seen as a toughest because there is no particular chemicals to tell that eda pako tame pass he
So end result कौन होची? I want to become a CA, but input जानी नानी को material पढ़ियार अच्छी, कौन पढ़ियार अच्छी, कितने घंटा पढ़ियार अच्छी, को topic पढ़ियार अच्छी, because we don't have a college, we don't have guidance. Okay. So ये जगह आमे के भी हमारा practice रे देखो many students come as a apprenticeship or articleship. हम सारे देखी लो why this pass percentage of Berhampur is falling frequently. सेबे हमें देखि पारलो कि बिकॉज ऑफ प्रॉपर गाइडेंस नाही. तो माने आपण निजे सिंगल हैंडेडली करू छने ना सपोर्ट टीम अछली आपण? See, this academy is totally my again brainchild. It's being supported by my family members, my principal sir. From I belong. I'm a partner of K. Rajpal. Okay. Chartered Accountants, which is the biggest firm in Odisha. Okay. So we have couple of partners in that. So 2-3 partners are there who give their knowledge sharing, and I have one of my partner Mohan Rao. He's also a chartered accountant. Okay. He also academically supports my academic. Yes. Brilliant. So how do you manage all of this thing at a time? It's brilliant actually. माने गोटे थरे सबु जिंस मैनेज करिया माने सीम्स लाइक वेरी टफ बट यू आर डूइंग सो आई कैन सी कि माने कोन ता पछि राज कोन केमिति मैनेज करो सबु जा गोटे थरे? सी मैनेज ना रे ही सब अर्थ अछि. राइट. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डूइंग. सेकंड थिंग इज मैनेजिंग. आई बिलीव इन मैनेजिंग. ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ there is something called as ଏବେ class ନେବାର ଅଛି. Okay, accounts class. So I have 3 to 4 couple of teachers who can teach accounts. So ମୋତେ ନିହାତି ରହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ. Okay. But there is a subject called auditing, which an auditor with highly experience can teach. ଏବେ ସେଟା କୋ ବି ଗୋଟେ faculty को ଦେଲେ ହେବ କି? ସେବେ ମୁଁ ଦରକାର. So what happens is I generally prioritize things. Means priority list करियर अछि. Okay, आज घरे एटा काम अछि. आज एटा जदि मु करबेनी केल भी तो करबो. So my presence एटा अछि कि when there is a representation of my husband in any of his business, that is an important task. So say एटा priority रसिबो. एबे आसेला health checkup grounds. So yes, taking my in-laws to a health checkup is my priority. जेड़ा कि मु दरकार. There is a shopping. I can directly deny कि shopping is not my cup of tea. You can. So it is all about कि तमे केमिति prioritize करूचो. सब जे तमे मुंड ऊपर जदी रखुचो, I could only do something, but not everything. Yeah, right. So सेति भाई to do things and manage things रे मु manage को believe करे. Managers are the one who make things to done by others perfectly. Yeah, right. So every देखो I cook my own stuff for me and everyone. Then comes like we are actually 3 daughters. So my parents don't have a son. So if there is some emergency being caused in my parents' house also, I am available. And when it comes to dropping of my son, I do, because it's not that कि मैं driver हाथरे भी पठे पारिबी, but I love to drop because that is the best time where son and mother have a chit chat on the way. So same time our bonding that create होगा. Likewise, night pick your son from a class or something. Assembly करिबो, and then today my husband loves some chicken curry which I can prepare. Now you manage कि आज बाहर आनेगा. Similarly, it first thing is priority. Then होची checklist. मु काली कौन करेबी आज रात्रि decide करेबी. सेड़ा जदि करो ना, you can't manage time. True. And next comes interest. So manage करले आदि जदि interest भी तमे couple करछो, सेड़ा केमि देले भी तमे करिदो. Right. So take interest in doing things, whether it is small or big, that doesn't matter. But interest नहीं के करूचो, yes, happy enough. Yeah. If तमे टिके कष्ट पड़ले the other person
is happy ସେଇଟା ଟିକେ ନେଇଯିବା for granted. କ'ଣ ହେଇଥାଉଛି finally we are living in a society ତ ମୁଁ ଖିଚକିଚରୁ ଟିକେ ଦୂର ରହିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସେଠି କ'ଣ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ ବେଶୀ କରିପାରିବା ସବୁ ଜାଗା ଗୋଟେ କ'ଣ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲାଟର ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟରଟା ଇନବିଲ୍ଟ ଆସିଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ କି କୋଡ଼ା ପରେ କୋଡ଼ା କରିବାର ଅଛି କୋଡ଼ା ଖାଇଲା ପରେ କୋଡ଼ା ଖାଇବାର ଅଛି ଓକେ ତ ଯଦି କିଏ ମାନେ ନ୍ୟୁ କମର କିମ୍ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ନର୍ମାଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବାର ଅଛି ସେଟା କାହିଁକି କୋଉଥିରେ ବି କାହିଁ ନା ହଉ ଫୁଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ ବେଭରେଜ ହଉ କିମ୍ବା କୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ତ ତମେ କ'ଣ 3 ମେଜର ମାନେ ଟିପ୍ସ ଦବ ତାଙ୍କୁ See, 3 to 5. Generally, I have a 4P principle. Okay. 4P funda should be there for startup, for running and everything. If you startup कर देलो, एड़ा नहीं कि मझरे ही रखी दबो. You want to run right. So for every business, 4P is very essential. First P is planning. Okay. Generally कौन होए कि हम समझे planner babas. आमे बहुत बढ़िया प्लान करू सो प्लानिंग करिबो बट से प्लानिंग रे भी बहुत बड़ा जिंस अछि जोडा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिसोर्स टाइम लेबर मटेरियल ए सब जगह तमे केमिति प्लान करूछो एबे देखंतु तम पॉकेट साइज रा छोड़ 10 लाख टका बट तमे प्लान करछो 20 लाख टका सो योर प्लान इज फ्लॉप सो प्लानिंग शुड बी एन इफेक्टिव प्लानिंग सो फर्स्ट इज योर प्लानिंग देन कम्स परसिवियरेंस तमे जो परसीव करछ मींस माइंड में जोड़ा भाबुछ ना सेडा को तमे परसीव करिया अछि जे प्लान दा जोड़ा आसुची ना मु स्टार्टअप करिया चाहतली एडा अरे बाबा एबे एडा ही लगा मींस तमे जो आइडिया डा भाबिछो सेडा तमे सेडा निजको आउटपुट रे भाबरे सेडा आनिया पे तमे परसीव करिना ओके सो परसिवियरेंस इज मस्ट सेडा को फील है बार अछि तमे कोन करिवो कोन निहाती दरकार का को सर्व करिवो ए कस्टमर टा आउतर मो पाखो केमि दे आसीबो से थॉट प्रोसेस टा भी दरकार परसिवियरेंस टा रहिबार अछि देन कम्स प्रोग्रामिंग सो कोडा पोरे कोडा प्लान तो कर दे बट प्रोग्राम एक्चुअली एग्जीक्यूट करियार अछि ना सो सेडा तमे प्रोग्राम करियार अछि प्रॉब्लम कौन होची देखन मु कहि देबी प्लान करतले पैसा अछि लगे देले बट तापर के चलेबो केमिति चलेबो हां एक्शन फोर्स नहीं ओके सो से प्रोग्रामिंग दा तमे डिजाइन करे अछि एबे स्टार्टिंग के कोन तम पाखे पूरा पैसा थिला एली कोन करंदी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर देले तापर रन करिया टाइम रे रनिंग रो वर्किंग कैपिटल नहीं तो से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रो प्रॉब्लम है ओके So why lot of businesses fail? Because after opening, after sales and service, जो feedback ता आसीबो सेडा नेटवर्क पे हमरो से थिंकिंग भी नहीं, long term process भी नहीं, विजन वगैरह yes vision भी नहीं, and the ultimate 4th P is जोड़ा कि भूली जान भी that is patience, right? से पेशेंस को बिजनेस टर्म्स रे कोन जेस्टेशन पीरियड ओके मो एबे गोटे सीड की सैपलिंग पुतली तारो सीड तारो फ्रूट आसीबा को गोटे टाइम है ना बिल्कुल दैट इज कॉल्ड योर जेस्टेशन पीरियड तो मो आज बिजनेस स्टार्ट करली मींस बिजनेस तो हमको पैसा देबा को केते टाइम नेको से टाइम रे हम पेशेंस का धरुनी बंद कर दो अरे से टाइम रे तमर स्टार्ट हुए से टाइम रे हम समझते कोन आउट ऑफ पेशेंस जाय कोन हमर खर्च होची एडा होची सो प्लान प्रॉपर्ली execute program properly perceive what you have planned and then hold patience let the seeds show you better fruits right this is the basic fund of a business जोड़ा के हमें भूली जाओ छो जे फैंसी ऑफर्स आने दो छी एतिक इन्वेस्ट करो एतिक मिले जे सेडा रे हमें पढु छु एलिमिनेटिंग द बेसिक कांसेप्ट सेडा हमें बुझी रहल छी ओके तो माने आपनकर गोल कोन माने लाइफ रे कोन करिवर अछि द एंड गोल्स कोन देखो लाइफ रो एंड गोल
since again we will be coming back to destiny code bune pa amu bi jana nahi Exactly. so ebe gadi e track re chalchi se track re chali jiba bas track ru baharu jibar nahi so I'm so happy to announce that after 7 years after lot of hardships my cafe is growing by 2. We are opening another branch. So our expansion which is going on. So stay tuned to it. Okay. So our second branch to open karchu. Premnagar 4th line re. Tara details bhi asibo. And there are lot of transformations going in my cafe structures also because the cafe da ka mu nije start kali because of passionate things. But when you grow into a business is also exactly like your life cycle. Birth, growth, maturity and decline. So my birth hella OD07 ro. Now I have to grow to get a more visibility, more expansion range, to reach more customers. So now I'm into the next stage of growth. So ଏବେ ବି ସେଟା କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ not so organized but semi organized structure ରେ ଥିଲୁ more organized way ରେ ଆଣିବୁ so we have registered our name so it's OD Cafe it's registered branding and lot of features where you will get at least a better city style feel where we are completely updated and upgraded yes cafe. yes we will be having and then and there we are going to implement SOP standard operating procedures so that from 2 we grow for 4 from 4 to 8 like that. Brilliant. Okay. So that is the expansion stage of my cafe and then we even have renovated and rejuvenated our Gyani ice cream store as per the new trendy look. And then when it comes to my academic progressing, I was so firm and rigid about that I will be providing only CA, CMA and CS courses. Okay. So means later part of the career. So ଏବେ ଆମେ କେବେ ଦେଖିଲୁ କି to make a student ready to CA ସେ ତାର +2 ଆଉ 10th ରେ ହିଁ ready ହେବାର ଅଛି. Okay. So ଆମେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ foundationally strong କରିବା ପାଇଁ we have launched integrated courses. Means ଆପଣ science students ଯେମିତି +2 ରେ 11th 12th ରେ ହିଁ NEET ପାଇଁ prepare हुअନ୍ତି. जदि गोटे स्टूडेंट सीए सीएमए आईएएम्स रे गोटे इंटीग्रेटेड कोर्स करिया चाहछे ताकू भी ऑन मींस एंट्रेंस एग्जाम्स थाए सेडा को भी हमें 11th 12th रो प्रिपेयर करूछु सो वी हैव एन इंटीग्रेटेड बैचेस जोड़ा कि तमरो रूट लेवल रो पिला को पूरा ओवरऑल व्यू विथ स्ट्रांग बेस ऑफ अकाउंट्स एंड बिजनेस टा कराबो. So that is the new way where we are offering classes for +2 both state and CBSE syllabuses. Okay, nice. Yes. Apart from that, we have financial literacy courses where we go to schools, colleges, banks, and the post offices and we deliver about this financial literacy. Okay. And I have been guest faculty to many of the global business schools. Where we give imparting knowledge about budgets, budget terms, accounting terms, जोड़ा कि गोटे layman, गोटे simple घरे बच्चा लोग को भी बुझे अच्छी कौन? What is given, what is take, what is debit and what is credit. Right. So similarly, हमें programs भी even नुआरे introduce करेगी. We have started in a very means prototype stage. Okay. एबे prototype stage रहो सेना हमें rapid stage को नहीं कीजिए वो. Okay. Right. So that is about our academy. Yeah. Academy. Okay, nice. So एमिति किछि फाइनल वर्ड्स अछि जोड़ा कि आपण कहिबे आजिकली माने जो झियो माने किमा वुमेन्स जे ट्राई करूछंदी
निज ड्रीम्स को फुलफिल करबा पई निज कैरियर बनया पई कारण बहुत गुडा जगह रे जो माने बैकफुट हे होछंदी जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट सपोर्ट ओके तो किछि से माने को कहिबे निज कैरियर माने आगो बढ़िबा पई किछि टिप्स देबे मैम आप राइटली गोटे क्वेश्चन ना पचारछन कि वुमेन या एबे देखंतु हमको के वैलिडेट करियार अछि ट्रू वी डोंट नीड एनी वैलिडेशन फ्रॉम एनीबॉडी यस ट्रू सो एबे देखंतु वुमेन मेन आगरे हम अछि राइट शी ही आगरे अछि when everywhere every term defines that women are always a step ahead of men gote financial stability gote financial independence by why are we not fighting yeah voting रे fight करछु दरकार और एडा दरकार बट गोटे घरे कैरियर बिल्ड करिया पे हम कोन पे निज लोक संगे फाइट करू when you can't fight with what you want at your home how can you fight with the others so when you want something say desire को burning रखो what I ultimately want to say is if you want results don't regret काश मु करथंदी काश करते तमे से थिला ना काश करते तमे से दिन जते फाइट करथांदा आज तो करथांदा because people settle at less and expect more depression comes तमे जदी फाइट करथांदा तमे निज कोन करथांदा why would depression come yeah right the biggest disease which is not visible in the entire world is depression so when you are satisfied enough in achieving your goals and dreams you need to fight for yourself so woman or a girl or someone if you want to settle less it's your choice but if you want yourself to be well performing so you need to fight and you need to have a clarity of thought that what you want to become ebbe mo coach ma'am actually ame academic ru asila pore students केमिति बिहेव करूचंदी students रो behavior केमिति analysis देखो जो they are like following the crowd कोन हटके करबा नै मो सांगा वाला ता पछरी हां बट तोर एक्चुअली इंटरेस्ट अछि ना नै सेडा भाबुना एबे से प्रॉस्पर हो पर ताको कॉपी करलो आपण तो केमिति प्रॉस्पेरिटी हो you are understanding right so one thing is always whenever it is a goal or a mission or a vision देखिया ना देखिया केमिति क्लियरली दुसरी बार अछि your dream should also be your dream should be visible your dream should be clear one has to fight for themselves to have satisfaction but कौन होची ना एबे देखन मैम गर्ल्स हो हमें बहुत बड़ा के जिनिस देखो छी financial independence जब आसुची maximum problems have been solved but say financial independence ro maximum everything has its pros and cons so tar advantage कौन होची कि you are not being like suppressed yeah right tar negative impact कौन होची arrogance घमंड जोड़ा आसुची ना मैम that has to increase your pride not your arrogance so women has to think about the way koda bhi problem thibo koda bhi thibo indirectly girls would be blamed because independent achi par घमंड achi but that घमंड should be in a positive manner so arrogance and when some things can be settled you have to settle सेटा को हमें नहीं हमें और खींच के देखो ना elastic is a bat when you stretch it when at one point you release ना it will come back and hit you like anything so हमें सेटा को realize करिवार अछि कि financial independence होए तो हमें तार pride केते नोच that will not create you any problem true बट माने मते मध्ये एमिति थॉट ही अछि कोन होची अल्टीमेटली हमें माने एमिति ऑर्थोडॉक्स फैमिली रो आसुछु तो माने एनी हाउ वी नीड फैमिली सपोर्ट ओके बट सेटा जदी मिलुनी माने मते फील होए जे वुमेन्स माने जे करिया को चाहू निजो कैरियर से बैकफुट हो जाए बट मु फील करे
तम कैरियर को तमे फॉलो करो अल्टीमेटली तम फैमिली तुमको सपोर्ट करी बाय हुक और कुक ओके तो सेटा ऑटोमेटिक बाय हुक और कुक हबो तो इट्स रियली ग्लैड ओके वैष्णवी I'll just add one point to it. See, आपण जो वर्ड टा कहले कि ऑर्थोडॉक्स को रहला ना ऑर्थोडॉक्स कहे कि आम घर के भी बाहर जाइए काम करेनी आम घर से करेनी when you go and discover the truth of your house and your forefathers से चाष किए करथिले सर लेडीज मैन से टाइम रे कोन घरे बसे के चाष करथिले सर ट्रू घर बाहर को जाए कि चाष करला पर ही तो तमे फूड खाई पालो नाउ यू आर हैविंग योर जनरेशन से जदि 10-15 जनरेशन आगरे जदि भाबी तांदे कि झियो पिला बाहर जाए कि काम करियर नाही हम जनरेशन कोड आस्थान सेड़ा देखम तो communities and I will not just go depth into what others have said but there nowhere has been mentioned in shastras or rituals anywhere that a woman should not go out and work सेड़ा को हमें कोन we have molded as per our convenience so say orthodox society रो जो culture थाए we need to understand कि से घरे कोन पे मना करछन एडा नै कि बिलीफ they are very protective yes they are very protective yes. about protective is better than possessiveness yeah true so एबे जो हमें निज को निज के orthodox भाबु छु ना we have to think कि what have our forefathers have done what have that generations grandparents have done for us but as per my knowledge India is now in a transition form okay धीरे धीरे change हो रहा है so it will come soon yes. okay so families parents माने समस्त change no, हो so fortunate ma'am really the entire life of mine was supported by my parents greatly helped by my sisters and so happy enough that my husband also shares my vision and my in-laws also take active participation in whatever work I do. My father-in-law supports a lot. He's doctor by profession. Brilliant. Yes, he and mother-in-law take care of all the households, everything supports and all. And great boon for me is family. My parents and my family. So you have a big support from your family. Yes. Brilliant. Okay, nice. It's been really a great conversation with you, Vaishnavi. I'm really glad. Actually, मैंने वो बहुत किसी दिन से सीखी तमोठो. Be bold. Okay, never show your weaknesses to others. Okay, it's like very have patience to grow. Okay, मैंने एमिति जिनसे जाको जोड़ा कि मैंने obviously मो दर्शक देखिबे कि viewers माने देखिबे बोले definitely तांको life रे changes आनिबो. देखो life is always like a wave. Yeah. Right. It is not like it's not like a rose bed. Yeah. So ups and downs. Right? That is part of life. Every man has a low phase in his life. Yeah. So समस्त low phase टा से COVID रे जोड़ा हेई गला. You have learned a lot from that. Yeah. So people are very cautious. जदि COVID type of situation रहबो. So low time, high time. Low time जदि रहबो, you need to have a lot of stamina from inside. High time है लाडो. You need to have that much of control on your pride and prestige. Because when you're high, you take risky things. Yeah. तो सेड़ा में देखा है. So ultimately same. When you want to achieve something, when you have a vision to get something, जब clarity अच्छे ना सेड़ा कैसे से लगे तो मैं करी. True, right. So it's a brilliant talk actually. Even I learned how to, as a woman, how to manage all of these things. Okay, it's brilliant actually, Vaishnavi. तमे आसिलो मो शो को मते इतने जिनस माने कहिलो इनफैक्ट मो जानिली बहुत जिनस इनफैक्ट मो व्यूअर माने देखिए माने बहुत किछ सिखिबे और डेफिनेटली तांको लाइफ रे चेंजेस आसीबो सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो एंड थैंक यू in fact thank you Sudha for your great initiative you are doing wish you all a very good luck let this be so popular among the ones we know and ones we even don't know okay so I wish you a very
Good luck also. Same to you, ma'am, for your goals and for your future plans. Okay, thank you so much for coming to my show.